Today we will learn another type of singularity that is known as doublet. Doublet is an actual combination of source and sink. There may be the flow situations in which there are singularities, like there is a source, there is a sink. If we have a situation in which there is a source of strength, say M, and correspondingly there is a sink of the same strength, then this combination will create a doublet. In one flow region there may be more than one source and sink, and so there may be more than one doublets. Suppose we are asked to find the flow pattern or to find the flow in a fluid region at a point P, and the source is given at some point A0, and let the source sink be given at a point minus A0. The 2 points are equidistant from the origin. This is not the general situation. In general, these points may be anywhere in the flow region. I am just telling it to tell you about some basic concepts which we will use in doublet, and then I'll derive it for the generalized situation. Here we have a source of strength M and a sink of strength M. Whenever I write positive M, it simply means here is a source. Whenever I write minus M, it simply means here is a sink. Now let this point be A and this point be B. Then AB, the combination AB, the distance AB is denoted by say delta S. Now the source and sink are in such a way that source is allowed to approach sink. If I am saying that this is a source, it simply means that fluid will emerge out radially. And if I am saying that here I have a sink, then it may be the situation, then whatever is emerging out from it is going into B. One more thing which we have to keep in mind, that we are working in two-dimensional flow. So this doublet will work only in a plane area. We are not working in three-dimensional flow, otherwise fountains are the good examples of doublets. So we are doing a particular case, that is we are discussing doublet in two-dimensional flow, and therefore source is allowed to approach the sink and it will describe a flow in a plane. Now here AB is taken as delta S. The combination twice A delta S rather M delta S, not twice A delta S. Twice A itself, delta S itself is twice A. Delta S M. This combination is always finite. So the combination of the strength and the distance between source and sink is finite. So if strength of source and sink goes to infinity, the distance between them becomes 0. And if M is small, then delta S may be large. Now a line joining source and sink is called its axis. Joining source and sink naturally of the same strength is called axis of doublet. Now in order to derive complex potential for a doublet,
I would like to take a generalized position. Here you are seeing that this is the axis of the doublet, and this doublet is having origin in between it. Further, this axis is making no angle with x-axis, it is just parallel to x-axis. So now I am considering a general situation to derive the complex potential of a doublet. I'll derive another picture. Suppose here is a point A where we have a source. So I am writing just M. And let this point be denoted by Z1. And I have some another point B, as I am writing minus M, simply means that I have a sink here. Then, and let the location of this point be Z2. Then joining A and B, I will get axis. AB is the axis of the doublet. Okay. Now take the middle point of it. Not as such the middle point, but yes, to describe the complex potential it is necessary to take a middle point of it and let it be O. You see that this middle point is not at origin. So in a particular case we will take that, suppose that O is shifted to origin, but presently it is somewhere in first quadrant, and let this point be denoted by Z0. So this is Z1, this is Z0, and this is Z2. Let us take that the axis of the doublet makes an angle alpha with x-axis. We will draw these lines for calculation purpose. We know that if it is alpha, this will also be alpha. So this AO is equal to A and OB is also equal to A. So this is A, this is 90 degree, and this is alpha. So I may find it to be A cos alpha. This is A cos alpha. This is also A cos alpha. Likewise, these two lengths will be A sin alpha. So it is A sin alpha. This is A sin alpha. Likewise, this will be A sin alpha. Now, we come to our source. In this situation, our source is situated at Z1. So, how will I write? W is equal to M is strength, and I write with minus symbol, minus M log Z minus Z1. Because if your source is at origin, then we write minus M log Z. But since our source is at the point Z1, I'll write minus M log Z minus Z1. Similarly, I'll write for sink. Our sink is at B. Strength of sink is M. So M log Z, it is situated at Z2. So Z minus Z2. Now I would write the values of Z1 and Z2. I know that at Z1, at this point Z1, I may write this as minus M log Z0 minus A e raised to the power I alpha. You see here, this is Z0. For this point, this will be my X and this will be Y. So I may count it with the help of Z0. It will be Z0 minus A e raised to the power I alpha, because it is A e raised to the power I alpha. So Z0 minus A e raised to the power I alpha. Similarly, for this point, this will be Z0 plus A e raised to the power I alpha.
प्लस आप अदरवाइज भी इसको काउंट कर सकते हैं अपने आप, z0 प्लस a e raised to the power I alpha. दिस पॉइंट इज z1. सो अभी थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ये होगा z माइनस, सिमिलरली ये भी होगा m log z माइनस, ये जो वैल्यू थी z0 माइनस a रेज टू द पावर i अल्फा, ये z1 की थी, और ये जो वैल्यू थी ये z2 की थी, तो यहाँ पे माइनस का सिंबल आ जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा. अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं. माइनस m log z माइनस z0, कॉमन निकाल लो तो ये आ जाएगा 1 माइनस a e raised to the power I alpha अपॉन z माइनस z0. सिमिलरली m log z माइनस z0, ये तो हमने कॉमन निकाल लिया, तो आएगा 1 माइनस, ये कॉमन निकाला, यहाँ पर आया माइनस, एक सेकेंड, यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर ये प्लस होना चाहिए, ये प्लस हो जाएगा, ये ठीक है. 1 माइनस a e raised to the power I alpha अपॉन z माइनस z0. इसको हम थोड़ा सेपरेट लिख लेते हैं. माइनस m log z माइनस z0 माइनस m log a e raised to the power I alpha अपॉन z माइनस z0 प्लस m log z माइनस z0 माइनस m log a e raised to the power I alpha अपॉन, ओहो फिर गलती हो गई, यहाँ पे आएगा माइनस m log 1 प्लस, और ऐसे ही यहाँ पर गलत हो गया, ये आएगा प्लस m log 1 माइनस. ठीक है, इसमें से ये हम देख रहे हैं कट गया. अब ये दोनों बचेंगे, इसको हम एक्सपेंड करेंगे और इसको भी एक्सपेंड करेंगे. एक्सपेंड करने के बाद हमारे पास आएगा m a e raised to the power I alpha अपॉन z माइनस z0 प्लस m a e raised to the power I alpha अपॉन, आप इसे कंफर्म कर सकते हैं कि जब आप लॉग का एक्सपेंशन खोलेंगे तो केवल इतना बचेगा आपके पास, एंड दिस इज इक्वल टू ट्वाइस am e raised to the power I alpha अपॉन z minus z0. Here this twice am is written as mu, and this is called strength of the doublet. So how you define the strength of a doublet? The distance between source and sink into the strength of either source or sink. Strength तो same है, तो दोनों को यदि हम multiply कर दें, the distance between source and sink and strength, then we get the strength of the doublet. So we get W is equal to mu e raised to the power I alpha upon Z minus Z0. So this is the complex potential if there is a doublet at Z0 inclined at angle alpha. आप दोबारा प्रीवियस फिगर देखिए, ये कहलाएगा डबलेट एट Z0. ओ पॉइंट को देखो आप, ये कहलाएगा डबलेट एट Z0, और इसका जो एक्सेस है इट इज़ मेकिंग एन एंगल अल्फा. तो इसीलिए इसका वो एक्सप्रेशन आया कि हमने म्यू को लिखा था
W को लिखा था, W को हमने क्या लिखा था, म्यू ई रेज टू द पावर आई अल्फा अपॉन जेड माइनस जेड नॉट। अब सपोज मैं ये कहूँ यहाँ पर कि हमारा जो डबलेट है वो ओरिजिन पर है, ठीक है, और एंगल की बात ना करें, एंगल है तो क्या होगा, ये लाइन शिफ्ट हो जाएगी और ये लाइन यहाँ पे आ जाएगी ऐसे करके, तब ये आपका O होगा। लेकिन स्टिल इट इज मेकिंग एन एंगल अल्फा विद एक्स एक्सिस, तो उस केस में क्या होगा, इफ डबलेट इज एट ओरिजिन, उस केस में क्या होगा, W म्यू ई रेज टू द पावर आई अल्फा अपॉन जेड, क्योंकि हम जेड नॉट को ज़ीरो रख देंगे। अब इसी में अगर हम कहें कि इफ डबलेट इज अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, देखो ये जो डबलेट है ये यहाँ भी शिफ्ट हो जाए और एक्स एक्सिस के अलोंग भी हो, तो अल्फा जीरो हो गया, तो अल्फा इज इक्वल टू ज़ीरो। उस केस में W कितना हो गया, म्यू ई रेज टू द पावर आई अल्फा तो बचेगा नहीं, ये हो जाएगा म्यू अपॉन जेड। अगर हम ये कहें कि एक्सेस ऑफ द डबलेट इज अलोंग वाई एक्सेस, तो अल्फा कितना हो जाएगा, पाई बाई टू, तो यहाँ पर हम लिख देंगे म्यू ई आई पाई बाई टू अपॉन जेड। इफ डबलेट इज एट ओरिजिन, तो ऐसे आप कितने भी कॉम्बिनेशंस बना सकते हो। ये फर्स्ट है, तो W बना म्यू ई रेज टू द पावर आई अल्फा अपॉन जेड, मेकिंग एन एंगल अल्फा। अगर मैं कहूँ कि ओरिजिन पर है डबलेट और अलोंग एक्स एक्सिस है, तो अल्फ़ा कितना हो गया, ज़ीरो, तब ये बना W इज इक्वल टू म्यू अपॉन जेड। अब मैं कहूँ कि ओरिजिन पर है और अलोंग वाई एक्सिस है, तो अल्फ़ा कितना हो गया, पाई बाई टू, तो उस केस में W कितना हो गया, म्यू ई रेज टू द पावर आई पाई बाई टू अपॉन जेड। तो इस तरह से आप अलग अलग बना सकते हैं। अब मैंने जैसे आपको कहा कि देयर में बी मोर देन वन डबलेट्स, सो सपोज देयर एग्जिस्ट n doublets at z0, z1, z2 to z n minus 1, इतने पॉइंट्स पर हैं डबलेट्स, मेकिंग एंगल्स अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 to alpha n with x axis. Then what will happen? W will be the combination of these n complex potential functions. So I am writing these simultaneously, and yes, their strength will be different, and strength is mu1 mu2 to mu1। तो बस यहाँ रखते जाइए इस वाले में mu1 ई आई अल्फा 1 अपॉन z माइनस जेड नॉट प्लस म्यू ई आई अल्फा 2 z माइनस z1 म्यू ई आई अल्फा 3 z माइनस z3, एंड लाइक दिस यू में यहाँ 2 आएगा। इस तरह से आप इसका पूरा लिख सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट doublet. So thank you. Your lecture is finished here.